Hello, Namaskar, and welcome to the CAA show. CAA, as all of you know, is Conversations and Analysis, and my name is Juggi Bhasin. तो 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो चुका है एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आई थिंक राम राज्य एक्चुअली हैज बिगन इन द कंट्री अ न्यू एरा हैज dawned. It's what a lot of people are saying, it's a civilizational moment, and I completely agree with that. तो कोई भी जब एक नया एपॉक शुरू होता है, जब एक नया एरा शुरू होता है, द फर्स्ट 100 days of that new chapter are very, very important. We have to watch out for what happens in the first 100 days of Ram Rajya. There'll be a lot of challenges which will be coming our way, and I'm going to talk about those challenges today in this particular episode and what we can probably do to ward off those challenges. तो एक तरह से जैसे हम कहते हैं एक नया इतिहास शुरू हो चुका है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट टू माय माइंड. इट इज एज इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर देन द मोमेंट व्हेन वी गेन इंडिपेंडेंस इन 1947. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. और मैं क्यों ये बोल रहा हूं कि वाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक जिसे कहते हैं कि पहले हमारे देश के अंदर इन द सोशल एंड द रिलीजियस डिस्कोर्स देयर वाज एन इम्बैलेंस. यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, बट नाउ द स्केल्स हैव बीन रिस्टोर्ड. अ बैलेंस हैज बीन रिस्टोर्ड बिटवीन द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया. देयर इज इक्वालिटी ऑन ऑल साइड्स एंड दैट इज वाई इट इज एन इपोकल मोमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट इन टाइम. और राम राज्य यहां से शुरू हो चुका है और मैंने एक पुराने एपिसोड में ये बोला था और मैं इसको दोबारा से इसके आई रिपीट दिस अगेन. राम राज्य का मतलब हिंदू राज्य नहीं है. राम राज्य का मतलब है दैट इक्वालिटी फॉर एवरी वन. दैट एपॉक हैज बिगन इन Indian society, in Indian history, and that's why it's a very seminal, it's a very important moment in time. लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जो पहले अब ये 100 दिन है, these are very, very important because a huge amount of challenges are not only coming our way, but those challenges have already begun. And I'm going to talk about that. But before I do that, I want to give you a backdrop of how these challenges are coming in, what kind of a background these challenges are going to emerge in front of us. तो मैं आपको कुछ करंटली 2-3 एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा. मेरे पास वैसे तो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स टू गिव यू, बट अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ 2-3 चीजें डेवलपमेंट्स हुई हैं. आई विल गिव यू दोज एग्जाम्पल्स एंड द पॉइंट विच आई एम मेकिंग इज दैट नाउ वी आर लिविंग इन एन एज. हमारे देश में राम राज्य शुरू हो चुका है, लेकिन बाहर विदेश में इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड falsehood and subjectivity prevails. मतलब पहले तो ये होता था कि लोग जो है थोड़ा बहुत बायस्ड ओपिनियन दे देते थे, लेकिन नाउ वी आर लिविंग इन टाइम्स व्हेन कंप्लीट falsehoods are being spoken, when nobody bothers about objectivity and people can resort to any means to get their way. तो आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूं. And these are international examples, but they will set the context of the backdrop of what I'm talking about. अभी आप हाल ही में आप जानते हैं कि एक रशियन प्लेन रशियन टेरिटरी के ऊपर से जा रहा था और उसमें 65 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, यूक्रेनियंस थे, और उस प्लेन को मिसाइल से उड़ा दिया गया एंड द प्लेन क्रैश्ड एंड एवरीबडी ऑन बोर्ड 74-75 पीपल डाइड इन दैट क्रैश. इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन. इसमें कोई देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट इट वाज एन यूक्रेनियन मिसाइल जिसने उस प्लेन को आसमान से उड़ा दिया और वो सब लोग मारे गए. But you see the narrative in the media channels, you see the narrative in a lot of governments in the world, and they are spinning a narrative that it was the Russians themselves who brought down their own plane. What could be more ridiculous than that? The point which I'm making is that this is the level to which people are going today to falsify reality or give a biased narration of events as they are unfolding before our eyes. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, और ये आजकल की बात ही है कि पूर्व यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको किसी महिला से छेड़खानी के इल्जाम में, होल्ड योर ब्रेथ, $83.3 मिलियन का कोर्ट ने, एक ज्यूरी ने
उनके ऊपर फाइन लगा दिया है कि आप ये दीजिए $83.3 मिलियन। और जैसे उनके जो वकील हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने कहा है कि ना तो कोई एविडेंस था, ना कोई डीएनए था, कुछ नहीं था। जिसे कहते हैं कि किसी कोई भी एक इंसान आया, उसने एलिगेशंस लगाई है, और उस एलिगेशन पे एक ज्यूरी, और वो हैंड पिक ज्यूरी थी, लोग कह रहे हैं न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर, जहां पर एक पर्टिकुलर पार्टी का बोलबाला है, और उस ज्यूरी ने उठा के उनको $83.3 मिलियन का फाइन डाल दिया। अब मैं कोई आई एम नॉट अ फैन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज देवर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद हिज प्रेसिडेंसी। मैं वो बात ही नहीं कर रहा, ना मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ वहाँ पर, ना उस पार्टी को, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड टुडे वेयर एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ फॉल्सहुड इज नाउ पॉसिबल। जो आप चाहें बोल सकते हैं, कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट अवे विद एज ए ब्लू मर्डर। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, Canada. Of all the countries in the world, Canada has started an inquiry that India has been interfering in the election processes in Canada. Now, what could be more laughable and humorous and idiotic than this? But ये हो रहा है। कनाडा जैसी कंट्री जो कि खालिस्तानीज के थ्रू हमारी कंट्री के प्रोसेसेस में इंटरफेयर करती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, वो कंट्री हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रही है दैट यू आर इंटरफेयरिंग इन आवर इलेक्शन प्रोसेस। तो द शॉर्ट पॉइंट विच आई एम मेकिंग इज दैट वी लिव इन अ वर्ल्ड टुडे वेयर subjectivity rules, subjectivity reigns, falsehoods are now deployed by practically everyone to make their point, to get their way. And today, पहले एक चीज होती थी, there was something called conscience, कि आप ऑब्जेक्टिव रहिए, आप थोड़ा बायस हो सकते हैं, बट स्टिल आपकी एक कॉन्शियंस होती थी। There is no such thing as a conscience or the truth. All that has been given the go by, and you can resort to any level to get your way. So this is the backdrop, this is the background we have to remember. और हमारे देश के अंदर इन कॉन्ट्रास्ट राम राज्य शुरू हो चुका है, which is of course the truth. There can be nothing better than that what has started, but this is the backdrop in the world, and we have to keep this in mind. तो हमारे सामने ऑलरेडी चैलेंजेस कुछ शुरू हो चुके हैं, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 4 or 5 points of these challenges which are definitely going to come away in the first 100 days of Ram Rajya. तो सबसे पहला जो चैलेंज जो हमारी तरफ आ रहा है, मैं उसके बारे में बात करता हूं। आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से अब पूरा एक ऑनस्लॉट आने वाला नहीं, शुरू हो चुका है, both on a social and religious discourse in the country. There will be an onslaught coming away on our economic strength. There will be onslaught coming away on our military might, and there will be an onslaught coming our way on our foreign policy objectives and our entire foreign policy. That process is 100% going to come our way. इसमें अगर आपको कोई शक है, अगर आपको कोई शुबा है कि ये नहीं होगा, एंड यू नो पीपल विल बी मोर केयरफुल बिकॉज ऑफ इंडियाज राइजिंग क्लाउड इन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो भूल जाइए, ये डेफिनेटली होने वाला है। बिकॉज देयर आर लार्ज सेक्शंस इन द वर्ल्ड टुडे विच आर वेरी अनहैप्पी विद राम राज्य, और मैं समझाता हूं कि उनको इसकी राम राज्य की पीड़ा क्या हो रही है। और वो पीड़ा ये नहीं हो रही है कि सिर्फ आपने एक राम के लिए आपने एक मंदिर बनवा दिया है अयोध्या में। दे आर अग्रीव्ड, दे आर एंग्री, दे आर गोइंग ऑल आउट अगेंस्ट द फैक्ट दैट राम राज्य, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू वेरी क्विकली। Ram Rajya actually represents for the first time in Indian history that, especially in the main community in India, the majority community, all the cracks, जितने जो splits थे, cracks थे, उन सबको भर दिया गया है। The entire community is now reacting like a homogeneous whole. यानी कि जो पहले एक जो कुछ वेस्टर्न ताकतें कह लीजिए, कुछ हमारे अंदर जो भी इनमिकल फोर्सेस हैं, तो इन ताकतों की हमेशा कोशिश रहती थी कि आपकी जो ये जो फॉल्ट लाइन्स है उसको एक्सप्लॉइट करा जाए।
but those fault lines have closed. Because today, whether you are rich, whether you are poor, whether you're of a higher caste or of a lower caste, whether you're a scheduled caste, you're a tribal, all people have already started going to the Ram Mandir. So there is a closing of gaps, there is a homogenization of the community which is taking place, and this a lot of powers in the world, a lot of some people in the country also don't like it because they exploit our differences and they don't want to see this homogenization taking place. And that is the principal reason why so many people are opposed to Ram Rajya. And this challenge is coming away. It has already started, where now people are questioning our religious and social discourse. And on the cards, I can also tell you that very soon, there will be attacks on our economic strength and military strength. We have already seen some of those attacks which came last year on our stock market via that Adani route. It could come through something similar or something different, but there will be attacks on our economic strength. We have fault lines, we know, which already exist via the Red Sea. Then there is the Maldives fault line. इसको भी लोग exploit कर सकते हैं. There could be trouble in the Himalayas. So you can expect that both your military might, your economic strength will be tested in the first 100 days of Ram Rajya. और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी, जो आपकी जो जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी है, उस पर तो डेफिनेटली सवालिया निशान ये लोग ऑलरेडी लगाने शुरू कर दिए हैं. दे विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट. देयर विल बी पीपल हु विल ट्राई एंड पुट within quotes sanctions on our. All that is possible in the first 100 days of Ram Rajya because people are certainly not happy that the country is now finding its unity in its diverse whole. The people are homogeneous in a certain way. We are all reacting like one, that is like Indians, and not like Hindus as a lot of people are saying, but like Indians. We are reacting like that, and that is something which is unpalatable to large sections in the world and also to some hostile forces within the country. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आपकी तरफ आ रहा है. Number 2, the armies, as I call them, the armies of hate, elitism and entitlement, they will go all out to poison the social fabric of this country. यानी कि जो हमारे बीच जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो हमारे बीच इंटर कम्युनिटी जो गुडविल है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस सोशल फैब्रिक को तार तार करने के लिए कई शक्तियां ऑलरेडी हैव स्टार्टेड वर्किंग. और मैं आपको छोटे छोटे 2-3 एग्जांपल्स देता हूं जस्ट टू टेल यू व्हाट दीज पीपल आर अप टू. मैंने इन महिला का पहले भी मेंशन करा है, दोबारा मैं मेंशन करूंगा, बट बिकॉज शी इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम द अदर साइड, अरफा खानूम, जो कि वायर की जो एंकर हैं. तो अभी हाल ही में उन्होंने बीबीसी पे एक इंटरव्यू दिया है जहां पर वो रो रो के राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बारे में बता रही थी कि उनका जो सपनों का भारत है वो खत्म हो चुका है, दैट इंडिया हैज बीन डिस्ट्रॉयड. कैन यू इमेजिन? एंड इन द सेम ब्रेथ शी इज टेलिंग बीबीसी कि मेरे घर के आसपास सब जगह मंदिर की घंटियां बज रही थी, लोगों ने झंडे लगाए हुए थे और इससे इनको बहुत परेशानी हो रही थी. Just imagine the level to which people like this have now gone to establish some kind of a Hindu Rashtra or a Hindu nation kind of a philosophy, and जिसे कहते हैं कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको तार तार करने की कोशिश मारफा खानूम जैसे अब लोग कर रहे हैं. Downright communal statements coming from such individuals. Then मैंने आप आई थिंक 2 दिन पहले देर इज अ पर्सन कॉल्ड सुबीर सिन्हा. वो अपने आप को कुछ एक्सपर्ट कहते हैं ऑन सोशल स्टडीज. ही इज बेस्ड इन लंडन. सो ही वॉज कॉल्ड एज एन एक्सपर्ट ऑन फ्रांस 24 चैनल. और जो उन्होंने अनशन बोला है भारत के बारे में, राम मंदिर के बारे में, on the present political dispensation in the country, that is, I can't even repeat all that nonsense on a safe channel like the one which you are listening to. और ये लोग अब किसी लेवल तक जा सकते हैं to put down India and and to tear the Indian religious and social
fabric. तो ये अटैक्स शुरू हो चुके हैं. These attacks have started in those familiar channels which we have talked about earlier, France 24, BBC, Wire, Washington Post, New York Times, सब जगह शुरू हो चुके हैं. They are only taking these kind of people, the comments of these kind of people, and the standard theme is कि A, the country has become a Hindu nation, and B, democracy is dead in India and the minorities are suffering. This is the recurrent theme that these people are running, and this is a huge challenge which is coming our way. ये चैलेंज ऑलरेडी शुरू हो चुका है. वी डोंट हैव टू वेट फॉर दिस एनी लॉन्गर. डे इन एंड डे आउट. आज सवेरे मैं अल जजीरा पर देख रहा था, इसी तरह के 2-3 लोग इकट्ठे होके और पूरी डिबेट में वो भारत को गालियां दी जा रहे थे. और जो आजकल हमारे देश में जो जिसे कहते हैं कि एक सद्भाव की जो भावना बनी हुई है, उस पर पूरा सवालिया निशान लगा रहे थे. सो दैट प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद फुल गस्टो फ्रॉम दिस साइड. थर्ड, you can expect some kind of a counter narrative now to emerge, especially from the West. What will the West try to do? And I'm not saying the West is like one homogeneous bloc. जैसे अभी आप जानते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट अभी आए हुए थे, मैक्रोन साहब, और काफ़ी अच्छी, there is a very good visit which happened. लेकिन there are large elements in the West which are inimically opposed to India. And in the Ram Mandir, they have found a handle. They have found an opportunity to delegitimize the democratic credentials of India. जी हाँ, उन्होंने अब पूरा का पूरा एक सवालिया निशान बना दिया है. Now they have started saying that India has become a theological country. यानी कि भारत जो है वो जैसे इस्लामिक स्टेट होते हैं, वो उस तरह का एक हिंदू फनाटिकल नेशन बन चुका है. जस्ट बिकॉज एक राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो चुकी है, राम राज्य शुरू हो चुका है हमारे देश में, उसकी वजह से वी हैव बिकम व्हाट इज कॉल्ड, जिसे कहते हैं रिलीजियस माइंडेड कंट्री. एक धर्मनिरपेक्ष देश हम नहीं रहे हैं. एक तरह का मेजॉरिटी रिलीजन यहां पर चलता है. दिस इज द न्यू नैरेटिव एंड इट इज नॉट कमिंग ओनली फ्रॉम, as I said, from the media and the non-governmental sector, जो कि already आपके against थे. But now slowly it will start coming from European powers in the West, probably even from elements in the United States also. So we have to watch out for that. There is a sizable section of the Western world which will now start building up this counter narrative against India. They will delegitimize your policies. They will, as we say, they will question your, और मैं यहाँ पर एक फ्रेज यूज करना चाहूँगा जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में यूज होता है. इसको कहते हैं रेजॉन दी एत्र. रेजॉन दी एत्र फ्रेंच में कहते हैं. इसका मतलब होता है रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस, या किस वजह से आप रहते हैं, जीवित हैं. तो आपकी जो जीवन रेखा है उस पर वो सवालिया निशान लगाना चाहते हैं कि आप जो है, आपकी धर्मनिरपेक्षता खत्म हो चुकी है, आप एक हिंदू राष्ट्र बन चुके हैं. दिस इज द न्यू लाइन ऑफ अटैक. And therefore, as I said, media, the non-governmental sector, the bureaucracy, and even governments in the West now will come after you. चौथा पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Expect in the first 100 days of Ram Rajya any major incident to happen. It can happen. When I say a major incident, it could be a Pulwama-like attack, a terrorist attack. और हम देख रहे हैं कि जैसे रजौरी सेक्टर ऑलरेडी हीटेड अप है. A huge attack could be in the offing within the country. There could be an onslaught on your economic capabilities, and certainly there could be setbacks even on the foreign policy front. You never know. Countries with which you put a lot of faith or trust in, those countries could stab you in the back. That is entirely possible. और मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ. अब जैसे हम सब कह रहे हैं कि फ्रांस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और है भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है. बट अगर आपने people who read foreign policy and who understand foreign policy minutely, they will observe that for the first time, I haven't seen this before. हमने एक फ्रेंच जर्नलिस्ट को इस बार रोक लिया था, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया था बिकॉज शी वॉज इन वायलेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स. लेकिन फ्रेंच गवर्नमेंट ने वो इशू हमारे साथ रेज कर दिया था.
तो मैं ये कह रहा हूं कि आप डोंट मिनिमाइज द फैक्ट दैट इवन द मोस्ट फ्रेंडली ऑफ कंट्रीज इन द वेस्टर्न ब्लॉक will find objections, they will find reasons to rail against you, and we have to see all this. We have to be prepared for this onslaught, we have to be prepared for this criticism coming away, which can adversely affect our economic, military, but most importantly our social fabric. जैसे मैं हिंदी में कहता हूं कि हमारा जो ये जो पूरा सोशल फैब्रिक है उसको तार तार कर सकता है अगर ये क्रिटिसिज्म और ये आलोचना शुरू हो जाए, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर 4 or 5 चैलेंजेस जो पहले 100 दिन में आप समझ लीजिए 100%, 100% आपकी तरफ आने वाले हैं. दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, दे विल डेफिनेटली बी कमिंग योर वे. तो अब दूसरा प्रश्न जो उठता है कि ये चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो उसका समाधान क्या है? डू वी हैव काउंटर मेजर्स? डू वी हैव थिंग्स वी कैन डू टू स्टॉप दीज थिंग्स इन द ट्रैक? ऑफ कोर्स वी हैव, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. दीज आर नॉट some very very some technical things which we have to do. These are some very basic couple of steps which we have to take to stop all this criticism, all this negativity coming our way. सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर, हमारी अपने अंदर, चाहे राम राज्य शुरू हो चुका है, बट हमारे अंदर, भारत के अंदर टॉप टू बॉटम मैं कहूंगा, ऊपर से नीचे तक एक बहुत जबरदस्त फॉल्ट लाइन है. और वो फॉल्ट लाइन ये है कि हम अभी भी, डिस्पाइट आवर ग्रोइंग इकोनॉमिक, मिलिट्री क्लाउट, डिस्पाइट ऑल द गुड थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन आवर कंट्री, वी स्टिल हैव वन मेजर फॉल्ट लाइन. And that fault line is we always, even today, we are desirous of praise from the Western world. हम अभी भी तड़पते रहते हैं कि हमारी लोग प्रशंसा करें. खासकर विदेशी जो आते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड से आते हैं, वो हमारी प्रशंसा करें. And the West knows this fault line of ours, and this is precisely the fault line they always exploit. और उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि ये, मैं मोस्ट पॉलिसी जो आजकल चल रही है मैं उनसे सहमत हूं, आई एम इन एग्रीमेंट, बट द पॉलिसी विच आई एम नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी अबाउट इज दिस एंटायर विश्व गुरु, दिस विश्व मित्र जो कॉन्सेप्ट है. इसका क्या मतलब हो? जब आप विश्व मित्र, और जब, yes, there is nothing wrong in theoretical terms of being a friend to all countries in the world, absolutely you have to be, मगर रियल पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं और एक विश्व मित्र के अंदर एक काफी बड़ा अंतर है. वी हैव टू प्रैक्टिस रियल पॉलिटिक्स एंड नॉट सो मच बीइंग विश्व मित्र, बिकॉज विश्व मित्र का मतलब यह होता है कि यू कम अंडर द एम्बिट ऑफ ब्लैकमेल, यू कम अंडर द एम्बिट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि आपकी अच्छी चाहे भावना हो, आपकी अच्छी इंटेंशंस हो, लेकिन लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, उसको एक्सप्लॉयट कर सकते हैं. और वेस्टर्न वर्ल्ड में इन लोगों को पता है, चाहे इनकी अपनी सोसाइटीज का इस टाइम जिसे कहते हैं बहुत ही बुरा हाल है. वी ऑल नो द प्रॉब्लम्स द वेस्ट इज गोइंग थ्रू, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ योर प्रॉब्लम, योर बिगेस्ट फॉल्ट लाइन, कि भारतीय को अभी भी ये प्रशंसा के भूखे हैं. वी आर स्टिल, जिसे कहते हैं कि हमारी लोग तारीफ करें किसी तरीके से. दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम. और जब तक इस पे वी डोंट गेट अ लिड ऑन दिस पर्टिकुलर weakness of ours, till then we will continue to be exploited, till then people will continue to go after us, because once a nation closes up, we are already become homogenized as I said, लेकिन जब एक बाहर की शक्तियों को यह पता चलता है कि अब भारतीयों को फर्क नहीं पड़ता, they become thick skinned, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको कुछ कह ले, तो then they start backing away. But as long as they know that they can affect our sensitivities, they can trouble us with their criticism, with their suggestions, with all their manipulation, we will always be open to manipulation, and that is our biggest problem as I see it. So we have to close the gap out here. We have to stop this Vishmitra kind of concept जो हमने float करा हुआ है. Yes, real politics रखिए, लोगों से साथ दोस्ती रखिए, मगर कोई आपसे अगर आपसे दे आर प्लेइंग गेम्स विद यू और दे आर हार्मिंग योर इंटरेस्ट, और जैसे मालदीव्स इस समय कर रहा है, वी शुड अडॉप्ट अ वेरी टफ पॉलिसी. और
एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। पहले का एक टाइम था कि हमने तो आई थिंक 70 और 80s के अंदर हमने अपने फोर्सेस को कई जगह भेज दिया था आसपास। आई विल नॉट नेम द प्लेसेस, बट चेक आउट ऑन योर फैक्ट्स। सब कॉन्टेंट के अंदर जो लोगों ने मतलब हमसे जैसे कहते हैं पंगे लिए थे, हमारे साथ जो उलझे थे, we have taken those steps because this is our area of influence. And I would say the Maldives is certainly our area of influence. We have to be very, very stringent and tough about it. तो किसी को खेलने मत दीजिए अपनी sovereignty के साथ. So these are the steps we have to take if we have to ward off the challenges in the first 100 days of Ram Rajya. और दूसरी बात, इनके फाइनल पॉइंट, और इस पे फिर मैं ये एपिसोड खत्म करूंगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चैलेंजेस आएंगे, हम जितना भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें, जितना भी तैयार कर लें, however much as we say we are in harness, but challenges will come. We will have to face the onslaught, but in the entire process, अब जो आपने सदियों के बाद बैलेंस को रिस्टोर करा है, जो सोशल फैब्रिक और सोशल हार्मनी का जो बैलेंस अब जो वापस आ गया है, जो किसी एक कम्युनिटी को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती अब, प्लीज मेंटेन दिस बैलेंस. यानी कि देयर विल बी अ टेंडेंसी, बिकॉज एक्सट्रीम एलिमेंट्स देखिए सिर्फ उस तरफ भी नहीं है, मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे अंदर भी एक्सट्रीम एलिमेंट्स होते हैं. तो देयर विल बी चांसेस कि चैलेंजेस जब आएंगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के पीछे जाइए. प्लीज डोंट डू दैट. The government has to be careful. The system has to be careful. We as a people have to be careful that we maintain brotherhood and love for all communities. हमें अपना भाईचारा रखना है, because this is the only fault line that these people can exploit. We have to maintain that. Challenges 100% आएंगे, लेकिन जो आपने अब सोशल हार्मनी अचीव करी है उसे हमें बरकरार रखना है. वी विल नॉट लेट इट गेट स्पॉइल्ड इन एनी मैनर. दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक. सो इफ वी टेक केयर ऑफ दीज टू फैक्टर्स, तो हमारे जो फर्स्ट 100 दिन है राम राज्य के, ओवरऑल अच्छी तरीके से हम इसको बीतेंगे. Then we will be much, much better prepared to face challenges in the future. But the first 100 days are critical, like that of any new chapter, like that of any new government which comes to power. This is a new chapter which has begun in India's history. The first 100 days are critical. And therefore, if we just take these two precautions and are mindful of the other challenges coming our way, we are on the right track. हमें कोई भी जिसे कहते हैं हमारा बाल को बांका भी नहीं कर सकता. We are absolutely will be okay in the long run as long as we keep these things in mind. And so, on this note, I come to the end of this episode of the CAA show. I hope you really enjoyed this episode. Do watch our show, but more important than watching our show, please put likes on our show. Recommend the show to your friends, to your colleagues. I try as much as possible to bring a different perspective on some of the current issues of the day. And do recommend this show to your friends. And we would love to see you all next time in the next episode of the CAA show. Goodbye and cheers from my end.